Welcome to Unacademy and welcome to our channel, that is Unacademy CAT4MBA. So guys, in this session I'm going to teach you a few questions of geometry. So it's a practice class. मैंने इससे पहले 4 सेशन लिए थे. I started from lines, triangles, then we have completed quadrilaterals, circles, mensurations. So this is the session wherein we are just going to solve the questions today. And the questions will be of a bit of moderate to higher level of difficulty, you can say. So let's go ahead. Let's start. Those who are watching me for the first time, let me quickly introduce myself. My name is Shyam Jagrut. I have been training the student for last 8 years and I have trained more than 7,000 students for MBA entrance exams. So I do teach the students for quantitative ability, logical reasoning and data interpretation. So let's begin, guys. So those who are new to our channel, quickly subscribe to our channel, that is Unacademy CAT4MBA, and you can also join us on Telegram. CAT4MBA is our Telegram group, and you can also get connected with me on Telegram. So you can search for Shyam_life. So let's begin. So these are few amazing subscriptions of Unacademy. I would really recommend to go for 6 month, 12 month or 24 month subscription, where you will be getting the mock test and complete support for your preparation, and at the same time you can avail 10% of discount just by using this code SHAM1. So let's begin, guys. Hopefully all of you are ready. Let's start. So here's the first question. Okay, x, y, z are integers that are sides of an obtuse angle triangle. So if x into y is 4, find the value of z. So these are the typical question type जहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर करना होता है, एंड टिपिकली कैट में ये क्वेश्चंस काफ़ी बार इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिलेंगे डेफिनेटली, रिलेटेड टू ट्रायंगल्स एंड एनी अदर इवन इक्वेशंस रिलेटेड, जहाँ पे हमें ट्रायल एंड एरर लेना होता है. चलो देखो, तो लेट्स ट्राई. ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, फर्स्ट कंडीशन गाइस, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में कंडीशन क्या होता है? If let's say z is the greatest side, so you can say x square plus y square must be less than z square. ये होता है obtuse angle के लिए. Then we have some clues, that is x into y is 4 and find z. So obtuse angle triangle कोई भी चलेगा हमें, just square of the third side is greater than the sum of the squares of the other two sides. ये condition होना चाहिए, then the triangle is obtuse angle triangle, right? So okay, let's start with this. X and y are integers and x into y is 4. तो x into y 4 होने के लिए एक ऑप्शन है कि 2 into 2 4 हो सकता है, 2 into 2, and the other integer values possible are 1 into 4. These are the two cases we can have. Okay, so let's talk about this case. Let's say x and y both are 2. So what can be the value of z? What can be the value of z? Z must be less than 4. Always remember, the third side is less than, the z must be less than 2 plus 2. 4 से कम होना चाहिए, ये मैंने ऑलरेडी ट्रायंगल्स में पढ़ाया था तुम्हें, एंड इसके डिफरेंस से ज़्यादा होना चाहिए, 0 से ज़्यादा होना चाहिए. तो z कैन बी 1, 2, 3. Right? So if we talk about 2 to 1, then 2 to 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा. एक्यूट एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगा. हमें ऐसा कुछ चाहिए जहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 स्क्वायर होता है 4, दिस इज 2 स्क्वायर 4, ये एडिशन कम होगा, ये एडिशन ज़्यादा है स्क्वायर, यहाँ पे तो नहीं होगा. देन
this is equilateral triangle, acute angle triangle. Then if you go for 2 2 3 2 2 3, 2 square plus 2 square 4, and this is less than 3 square, so here it is going to be the obtuse angle triangle. So if that find the value of z पूछा है, so अगर ये इसके लिए यूनिक आंसर होगा तो डेफिनेटली आंसर 3 है, but it may have we have one more answer option that is more than one possible value for z. तो ये तो नहीं पता, यहाँ तो नहीं बन रहा है, बट इस केस में बन सकता है. So let's try for this 1 and 4, and z can be anywhere between the difference between this is 3, that is greater than 3, and less than 5, it can be only 4. So this is again an acute angle triangle. It's possible, but it will be an acute angle triangle. So only one obtuse angle triangle is possible, so answer is 3. So bit tricky question, not that tough. Definitely recommended. अगर इस टाइप के questions आते हैं तो definitely attempt करनी चाहिए. Let's go ahead. So guys, today's session is just a practice class. काफी अच्छे and tricky questions है. तो those who are watching this video, the recommendation is every time you need to try the questions at your own, and after that go through the explanation. So let's go ahead. How many isosceles triangles with integer sides are possible such that the sum of the two sides is 12? So कोई भी दो साइड का एडिशन 12 होना चाहिए. नॉट नेसेसरीली जो दो इक्वल साइड है वो भी हो सकते हैं, अनइक्वल साइड का एडिशन भी 12 रहेगा तो भी चलेगा, बिकॉज इट इज नॉट गिवन और देयर. बट वन थिंग इज फॉर श्योर, वी वांट द ट्रायंगल टू बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. सो वन थिंग इज this is 6 and this can be anything. This is the A. So what can be the value of A? A must be less than 12 and greater than 0. So there are 11 triangle possible like this. So we'll have value of A can be 1 to 11, anything, right? So we have 11 triangles possible. Okay, so now but the thing is ये तो एक हुआ, आंसर इज नॉट 11 बिकॉज हमें चाहिए दो साइड्स का एडिशन 12 होना चाहिए. बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दो साइड अनइक्वल साइड का एडिशन 12 हो, जैसे 5 and 7, and the other side can be 5 or 5 and 7, another side can be 7. ये possibilities है, right? Hopefully you're getting how I'm writing. Okay, let's understand. I'll tell you what's the logic to write. Tell me the numbers whose addition is 12. 5 7 is 12. 6 equal side तो हो गए, हम दो unequal side का length 12 लाने की कोशिश कर रहे हैं. So it can be 4 8 3 9, after that 2 10, then 1 11, right? देन अभी आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए, मतलब थर्ड साइड या तो 5 होगा या तो 7 होगा. तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. सो व्हाट आई एम राइटिंग हियर, वन केस आई एम राइटिंग इट एज 7 एंड द अदर केस आई कैन राइट इट एज 5 7 5. ये दो 5 सेम या तो दो 7 से. देन यहाँ पे क्या होगा, थर्ड साइड कैन बी 4 और 8. तो यहाँ पे 4 लिख देता हूँ और एक बार वापस से लिखता हूँ. 4 8 के साथ 8 रहेगा तो भी चलेगा. आई एम जस्ट listing all those possibilities. Then we'll decide if it is if that triangle is possible or not. That will decide later. Okay, so 3 and 9 तो मैं यहाँ पे 3 ले सकता हूँ, या तो फिर 3 9 के साथ मैं 9 ले सकता हूँ. आइसोसेलेस दो साइड सेम रख रहा हूँ मैं, यहाँ पे 10 ले सकता हूँ, या फिर 2 10 के साथ मैं 2 ले सकता हूँ. अदर थिंग 1 11 के साथ 1, या तो फिर 1 11 के साथ 11. यहाँ पे क्लियरली पता चलता है गाइस, ये दो साइड्स का एडिशन 1 + 1 2 और थर्ड साइड 11, इट इज नॉट पॉसिबल. यहाँ पे 2 + 2 is 4 and third side is 10, it is not possible. Then यहाँ पे 3 + 3 is 6 and the third side is 9, it is not possible. Third side of the triangle has to be less than the sum of the other two sides, right? So 4 + 4 8 and third side cannot be 8. So that's why ये cancel हो जाते हैं. Others are possible. तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितने होंगे, यहाँ पे 11 ट्रायंगल्स बनेंगे. देन 1 2
3, 4, 5 and 6. 11 plus 6, we have got the answer as 17. That's answer option C. Okay, let's move to the next question. The perimeter of triangle with an integer side is equal to 15. So we have a plus b plus c equals to 15. How many such triangles are possible? Again, we have to solve it manually. Okay, so the simple funda, ट्रायंगल के दो साइड्स का एडिशन जितना भी आएगा थर्ड साइड उससे कम होना चाहिए एंड वो डिफरेंस से ज्यादा होना चाहिए, राइट? दैट्स व्हाट वी लर्नड इन लाइंस एंड ट्रायंगल्स में, हमने ये देखा था फर्स्ट सेशन ऑफ ज्योमेट्री. ओके, तो अगर मैं a का वैल्यू 1 रखता हूं, तो इफ आई टेक a एज 1, सो b एंड c मिला के 14 होना चाहिए, right? So definitely only one thing will be possible. 177 होने के चांस है. देखो क्या होगा, बिकॉज 7 + 1 8 होगा, ये 7 से ज्यादा होगा. डोंट टेल मी कि ये ऐसे कुछ ट्राई नहीं क्यों नहीं किया. 12 and 2 तुम ट्राई नहीं कर सकते हो, बिकॉज 2 + 1 होगा 3 एंड थर्ड साइड 12. दैट इज नॉट पॉसिबल. ओके, तो सिंपली इसका हाफ कर सकते हो तुम. 15 का हाफ कितना होता है? 7.5. तो हमें 7.5 से ज्यादा लाना पड़ेगा ना दो साइड्स का एडिशन. सो व्हेन आई एम ट्राइंग 1, आई एम ट्राइंग द थर्ड सेकंड साइड इज 7 and 7. दैट्स द वन पॉसिबिलिटी. अदर थिंग, अगर तुम 1 के साथ दूसरा कुछ भी ट्राई करने जाओगे, 1 के साथ 8 and 6 ट्राई करोगे, दैट इज नॉट, दैट वोंट बी पॉसिबल, क्योंकि 1 + 6 7 होगा एंड ये दोनों साइड्स को ऐड करके 7 हो रहा है. थर्ड साइड 7 से भी ज्यादा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है. तो विथ साइड 1 देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी. So if a is 1, then we can take a as 2. अगर मैं 2 लेता हूं तो बचता कितना है? 13. तो 13 के लिए यहां पे हो सकता है 6 7. 6 and 7 13, right? It is possible because 2 + 6 हो रहा है. ओके, किसी ने 5 ट्राई कर दिया, 2 के साथ 5 ट्राई करते हैं और इधर 8 ट्राई करोगे, नहीं चलेगा, क्योंकि 5 + 2 7 हो रहा है. यहाँ पे 8 थर्ड साइड है, ज्यादा हो जाएगी, राइट? देन 1 के साथ 1 है, 2 के साथ एक पॉसिबिलिटी है. देन वी हैव 3. अगर हम ट्राई करते हैं, एक को अगर 3 ट्राई करते हैं तो यहाँ पे बचेगा 12. तो आई कैन टेक इट एज 6 and 6. दैट इज पॉसिबल. देखो, दिस वन इज पॉसिबल. देन अभी तुम यहाँ पे थोड़े से चेंजेस करोगे तो चलेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 5 भी लेता हूँ तो 5 + 3 8 तो हो रहा है and the third side will be 7. so यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज बने, 3 के साथ दो पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं. देन इफ वी ट्राई a as 4, तो 11 बचता है, so 5 6 हो सकता है, और 9 हो रहा है, दैट इज ग्रेटर. देन 4 के साथ मैं 4 and 7 अगर ट्राई करता हूँ तो 7 + 4 4 + 4 is 8 and that is greater than 7. so ये भी पॉसिबिलिटीज है, दो पॉसिबिलिटीज 4 के साथ बन रहे हैं. so how many we have got up till now? 1 2 3 4 5 6. then we can try for 5. if I take a as 5, so I will be left out with 10. so we can have equilateral triangle. that's simple possibility. एक तो हो ही सकता है ये. अब किसी ने 5 के साथ दूसरा कुछ ट्राई किया, 5 के साथ लेट्स से 4 ट्राई किया एंड इधर हो जाएगा फिर 6. 5 4 6, दैट्स ऑलरेडी डन. दैट्स ऑलरेडी डन. तो 5 के साथ ये तो हो गया 5 के साथ. देन 5 के साथ अगर तुम 3 वगैरह ट्राई करोगे तो यहाँ पे होगा 7. 5 3 7, दैट इज ऑल्सो ऑलरेडी डन. देन इफ यू ट्राई 5 के साथ 4 ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि 4 के साथ हमने सारे लिए थे, राइट? तो यू नीड नॉट टू गो अहेड. अगर तुम 6 वगैरह ट्राई करके देखोगे, 6 के साथ फिर 9 बचेगा एंड यू टेक 9
तो 5 4 कुछ भी ट्राई करके देखोगे दैट वॉन्ट बी पॉसिबल हियर, बट एनीवेज हमारे पास आंसर ऑप्शंस भी हैं. सो ऑलरेडी कितने बना दिए हमने, 7 तो हमने बना दिए. सो आंसर इज 7, राइट. 8 वोंट बी पॉसिबल. Let's go for the next. Okay, so here's quite interesting question. Really easy, not that tough. तुम्हें थोड़ा सा carefully पढ़ना है, carefully observe करना है, observe the diagram. Definitely you'll be able to solve it. ABCD is a regular pentagon. So regular pentagon, what is the angle of a regular pentagon? ये हमने quadrilaterals में पढ़ा हुआ है. That is 108 degree. क्या formula था guys? n minus 2 into 180 degree. That is the sum of interior angles. Sum of interior angles. So 5 minus 2 into 180. That has to be 540 degree. And कितने angles है total? 5. So 540 divided by 5 comes out to be 180. Okay, so anyways that's a different part. ये सबको already पता होना चाहिए. Pentagon, hexagon के लिए तो याद हो जाना चाहिए. Okay, so let's go ahead with the question. So this is 108 degree and we have a point O such that the AOB is an equilateral triangle. So if I connect OA and OB, we'll get the equilateral triangle. So definitely if this side is AB, ये दोनों side same होंगे. So we have this as A, so this is 60 degree, 60 degrees. So ये 108 degree है. Each of the angle is 108 degree. So this has to be 48. And one more thing, if I connect this to connect EO. Okay, now understand. ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एट द सेम टाइम ये पेंटागन के तो पांचों साइड इक्वल है. तो कहने से ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल AEO, दिस ट्रायंगल इज गोइंग टू बी आइसोसेलेस ट्रायंगल. अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड सेम है, तो ये दोनों एंगल्स भी सेम होने चाहिए. दिस एंगल इज 48 डिग्री. सो द रिमेनिंग पार्ट इज टू बी 180 minus 48, that is 132, and उसका हाफ हो जाना चाहिए. This must be x degree, this must be x degree. So 2x degree is 132. So degree. That's answer option A. Hopefully you understood this part. Let's move to the next question. Again, the ratio of the longest diagonal to the shortest diagonal of a regular octagon. So definitely ये diagram तुम्हें एग्जाम में नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन के साथ, ये हमें खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा. You will be just given with this question. Okay, so longest diagonal and the shortest diagonal of a regular octagon. Octagon के लिए ये एंगल कितना होगा? This angle must be, octagon is number of side 8, 8 minus 2 into 180 divided by 8, 6 into 180, 135. Okay, so if this is right angle triangle, this side is A, this is 135 degree, so this angle has to be 45 degree. That is 45, this is also 45 degree. You can simply get this triangle, right? So let's try this.
शॉर्टेस्ट डायगोनल मैं लिख देता हूँ. शॉर्टेस्ट डायगोनल मीन्स वी नीड टू फाइंड, यू कैन से AC हमें ढूंढना है, and the longest diagonal can say EE. Longest diagonal E. Okay, let's try to get the value in terms of A. We'll try to calculate. Okay, so for the time I'll just erase this part. So in a 45 degree, 45 degree and 90 degree angle triangle, क्या होता है? This side hypotenuse is A and ये 45 डिग्री है, मतलब ये दोनों सेम होने चाहिए. तो x square plus x square will be a square, 2x square will be a square, x has to be equal to a by root 2. So this AP is a by root 2, this is a, this will also a by root 2. So a by root 2 plus a by root 2, I'll just erase this part. We understood how it comes. Okay, so we can get AD, and to get AE, the longest diagonal, what I can do, I can use the Pythagoras theorem here. AE square is equal to AD square plus DE square. Okay, now AD, we can get AD as A plus A by root 2 plus A by root 2, that is twice of A by root 2, you can say A root 2. So if you want AE, you can do A plus A by root 2 whole square plus A square. So let's calculate this. A square plus 2A square plus twice of A into A root 2, that is 2 root 2 into A square plus A. So we can get AE as square root of A square plus 2A square plus A square plus A square. A square तो common ही आ जाएगा, so it is 1 plus 2 plus 1, that is 4. 4 plus 2 root 2 into A. So that's what we got the value of AE. The same way अभी हमें चाहिए AC. We can again use the formula. Okay, if this is A, this is A by root 2, this is also A by root 2, and this is A by root 2 plus A. Again we can use the Pythagoras theorem here. AC square will be equal to AQ square plus CQ square. So AQ is A plus A by root 2 whole square plus A by root 2. So if we add the, if we expand and add this, if we solve this, we'll get the calculation as A square plus A square by 2 plus 2 into, so that is root 2 ही बचेगा, root 2 A square plus square by 2. A square by 2 plus A square by 2 is A square, with 2A square, 2 plus root 2, 2. So that's the value of AC, and if we calculate, this is the AC square, so AC will be equal to under root of, or what we'll do, let's not get into the square roots, we'll take the square roots later, just keep it this way.
4 plus 2 root 2 into a square, that is ae square. Okay, so we are supposed to calculate the longest diagonal and shortest diagonal का ratio हमें निकालना है. So can I say ae square upon ac square is equal to, this a square will get cancelled, it is 4 plus 2 root 2 upon 2 plus root 2. If we take 2 common here, this will be 2 in bracket 2 plus root 2, which is same as denominator. This will get cancelled 2 by 1. And if we take the square root, we'll get ae upon ac as root 2 upon 1. So root 2 upon 1, that is answer option D, you can say. That's the correct answer. Sure guys, let's speed up. Those who are watching, they can quickly drop in the comment section if you have any answer to any of the questions. Questions थोड़े से tricky है. Think about it. Try to solve it at your own. So hexagon, area of hexagon. देखो हमें क्या करना पड़ेगा to get the shaded area of this shaded region. यहाँ पे 6 shaded region है, हमें सिर्फ एक region का area चाहिए. So if we just subtract the area of hexagon from area of circle, you'll get the shaded region area of the 6 region, and if you divide by 6, you'll get the area of 1 region. So 1 by 6 सारे आंसर ऑप्शन में दिख रहा है. Hopefully you understood why it is 1 by 6. 1 by 6 into area of circle minus area of hexagon. This is the easiest question you can have. Just calculation part करो. I will do it carefully. That's not tough at all, and I'm quite sure मुझे ज़्यादा explain करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस question को. 1 by 6 into, all of you know area of circle is pi into r square minus, what is the area of hexagon guys? Area of hexagon is 3 root 3 by 2 into a square, that is 6 times the area of equilateral triangle. That's what we know, where a is the side of hexagon and r is the radius of circle. But the problem is we are not given either radius or that side of the hexagon. What we are given is the shortest diagonal of the hexagon is 3 units length. Shortest diagonal. So let's talk about the shortest diagonal. Shortest diagonal here will be, let's say, ED. दूसरा भी ले सकते हो इसको, not compulsory. So ED is the shortest diagonal. Okay, so how to get the, this is 3. So if I draw a perpendicular from here, this will be 90 degree, this will be 60 degree, and this is 30 degree, right? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा गाइस, ये 120, ये एंगल 120 डिग्री होता है. तो डेफिनेटली जब तुम ऐसे कुछ ड्रॉ करोगे तो इधर ना बचेगा 30 30 बचेगा, 30 60 90. तो इन 30 60 डिग्री 30 60 90 डिग्री थ्योरम हमें यहाँ पे अप्लाई करना है. द साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, this is 3 by 2. Okay, so we can get the value of a. 3 by 2 is root 3 by 2 of hypotenuse. So that simply means the hypotenuse has to be root 3. So we have got the side of the hexagon. Side of the hexagon must be root 3. Right? If the side of the hexagon is root 3, तो ये circum circle का radius भी root 3 ही होगा. चलो, I'll erase this part. Now, if we connect the diagonals,
I'll just connect few diagonal, दो diagonals की जरूरत है. ये √3 है, we know this is going to be an equilateral triangle, तो ये सब √3 होगा, तो radius of circle भी √3 ही है, and ये भी √3. So now we can simply solve it. It's not 1/2, it's 1/6. Okay, so we can get 1/6 into pi into √3 square will be 3 minus 3√3/2 into a square, that is also √3, so it will be 3. So this will be 3 pi minus 9√3 by 2. Pi minus 9√3 by 2, right? 1/6. That's answer option A only. That's the easiest thing. Okay, so let's go to the next question. A circle with a radius 5 centimeter has chord RS at a distance of 3 units from it. So the radius of circle is 5 centimeter and we have a chord at a distance of 3 units from it. Let's say this is RS. This is 3 units and the radius of the circle is 5. So you can simply say 3 square plus 4 square 5 square होता है, तो ये तो हमें क्लियरली पता चलता है. Then we have PQ chord which intersects RS at T such that, so we have total RS का लेंथ हमें मिल गया 8 because this is 4 plus 4. That's the first thing you can get, the length of RS. After that, PQ intersect that RS at point T such that 1/3 of RT. TS is 1/3 of RT. So what I'll do, I'll just erase this two things now. We have got the length of RS and there is one point T here such that TS is 1/3 of RT. तो यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे 2/3 है. No, it is not 2/3, it is 1/3 of RT. So TS upon RT का रेशो, TS अगर 1 है तो ये 3 है, तो ये अगर 2 है तो ये 6 है, 2 plus 6 होता है 8, राइट? दैट्स द सिंपल. सो ये 2 यूनिट्स है और यहाँ पे ये पॉइंट जो है ये 6 यूनिट. इट्स नॉट 1/3 ऑफ द टोटल, इट्स 1/3 ऑफ RT. RT है 6 और 6 का 1/3 करोगे तो ये है 2 TS and the total is 8. Right, so we can conclude this up till now and hopefully all of you understood मैंने वो कैसे कैलकुलेट किया. Then after that we can go for this कि यहाँ पे एक PQ chord है जो T से पास होगी and we are supposed to calculate the minimum value of PQ. A bit tricky question. PQ. So यहाँ पे एक सर्कल का प्रॉपर्टी हमें यूज करना है कॉर्ड्स का. इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड्स हमने सर्कल्स में सीखा था, ये इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉर्ड्स एंड सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. इसे हम प्रूव भी कर सकते हैं. नीड नॉट टू प्रूव इट हियर, यू कैन डायरेक्टली यूज दैट प्रॉपर्टी. So what is the theorem related to intersection of the chords? RT into TS
इस कॉर्ड के दो सेगमेंट हो रहे हैं यहाँ पे. दिस प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू PT into TQ. So that's the theorem related to circle we have, and RT का वैल्यू हमारे पास 6 है. Then we have TS as 2. So PT into PQ ये वैल्यू हमें मिलेगा 12. Okay, so product of these two values, so let's say XY है या PT into TQ जो है वो 12 है. That's what we know. And we want the minimum value of PQ. So let's take this as the center of the circle. So we have this as 8. Okay, now one important thing we can use here is थोड़ा सा ये ज्योमेट्री से हटके जाएगा, क्योंकि अरिथमेटिक मीन मीन्स सिंपल होता है एवरेज, एंड ज्योमेट्रिक मीन्स मतलब उनका मल्टीप्लिकेशन. ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग. अगर ये x है और ये y है, सो लेंथ ऑफ PQ जो है दैट इज x प्लस y, राइट, एंड इनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो है x into y. सो सिंपली लेट्स नॉट गेट इनटू द ज्योमेट्रिक मीन. सिंपल वन थिंग आई वांट टू टेल यू इज इनका जो एवरेज आएगा दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर दैन द स्क्वायर रूट ऑफ देयर मल्टीप्लिकेशन. ओके, दैट्स व्हाट यू कैन रिमेंबर. अरिथमेटिक मीन एंड दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन. ओके, तो अरिथमेटिक मीन जो होगा वो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर रूट से ज्यादा आएगा, एंड यू कैन सिंपली टेक फ्यू वैल्यूज एंड क्रॉस चेक, वो हमेशा वर्क करेगा. ओके, सो रिमेंबर दिस पार्ट, एंड वी आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x plus y, that is x plus y is PQ. So we can say x plus y must be greater than or equal to, you can say greater than or equal to it is twice of under root of x into y का वैल्यू हमें मिल गया. x into y is 12. So we have okay, hello everyone. Yes, you can go by the quadratic equation even, but हमें, so can you tell me, have you understood this part? I guess Shivam, right? Your name is Shivam. Hopefully I'm right. Okay, so x plus y जो होगा वो किससे ज्यादा होना चाहिए? This will be 4 root 3. It should be greater than or equal to 4 root 3. So answer option B is the correct answer. Have you solved this? Understood this part? A bit tricky you can say, because यहाँ पे तुम्हें सर्कल्स के थ्योरम तो यूज करने थे, बट ये थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन. That's the inequality you can remember. Okay, let's go for the next one. The area of rhombus of perimeter 56 is, perimeter 56 अगर है तो 56 डिवाइड बाय 4 rhombus है, तो ऑफ कोर्स सारे साइड्स सेम होंगे. चलो क्विकली ट्राई इट. बाय द टाइम I can explain the question, it should not take more than a minute. Think about it. Quadrilaterals में हमने rhombus के प्रॉपर्टीज देखे थे. एरिया ऑफ rhombus, hopefully remember the things. area of rhombus क्या फॉर्मूला है? What's the formula for area of rhombus? That is half into d1 into d2, right? I guess इसी टाइप का कोई क्वेश्चन भी हमने किया है पहले. And the diagonal of rhombus are perpendicular.
Okay, so diagonals are perpendicular. So what I'll do, perimeter हमें पता है 56, that simply means 56 divided by 4, it has to be 14, 14, 14. And the area is 100, so find the sum of the length of the diagonals हमें पूछा है. So I'll take this as x, this as y, this will be x. Diagonal bisect each other, this is the midpoint, but diagonals are not equal. Okay, and we know x square plus y square, x square plus y square has to be 14 square, that is 196. Any answer, Shivam? X square plus y square is 196, and one thing we have, that is twice of x. This diagonal is twice x. d1 को मैंने 2x लिया, d2 को 2y लिया. So what is the area? Half into d1 into d2. So this will get cancelled. Area must be 2xy, and area is given as 100. So area is 50. Not 50. 2xy is 100. Let it be. Let's not calculate. Let's keep it this way, because we can use one thing now. X plus y whole square must be x square plus y square plus 2xy. That's the identity you can use to get the value of x plus y whole square. So x square plus y square is 196, and 2xy is 100, so it has to be 396, and x plus y must be square root of 396, 400 ka square root. But anyways, do not calculate x plus y, because we are supposed to find the sum of length of the diagonals. Length of the diagonals means we are supposed to find 2x plus 2y. So we can say it is twice of x plus y, which will be, let's calculate the final answer. Twice of under root of 396. So कितना होना चाहिए आंसर? Square root of 400 will be close to 19. 19 का डबल होना चाहिए. Just a minute. Let me check the calculation part once. It's 100 only. Sum of the diagonals will be twice of x plus y, and we have area as this. X y must be equal to x y must be 50. Okay, so one mistake I did. Here it is right. So we have 2xy as 100. Sorry, 196 plus 100, it's not 396, it's 296. Okay, so twice of under root of 296. This is going to be 17 से ज़्यादा आएगा. 289, 17 का डबल होता है 34. So we do have only one answer option, that is 34.4. Right. So it was not 396, my mistake. It is 296.
Yes, correct, Shivam. Right. So anyways, you can just do it approximately. Okay, twice into 17, minimum 17 to aega, so it has to be greater than 34. And anyways, we don't have any answer option which is greater than 34. So need not to get into the decimal points, you can simply calculate. So let's go ahead and try this one. Again, a simple question. A rhombus has perimeter 12. A rhombus has perimeter 12 means this has to be 333 only. This is the easiest question. I don't think मुझे कुछ भी बताने की जरूरत है इसमें. This has to be 120 degree. Opposite angles same रहते हैं. So this must be 60 degree. Need not to do anything. तो ये equilateral triangle बनेगा 333. So twice into area of equilateral triangle, that is twice into root 3 by 4 into a square, that is root 3 by 2 into 9 root 3 by 2. That's answer option A, the easiest question you can have. Let's move to the next. Sorry. Try this one. A circle with center O and radius 25 centimeter has chord AB of the length 14 centimeter in it. Find the area of the triangle AOB. Again, an easy question. Think about it quickly. Any answer, Shivam? Circle with center O and the radius 25 as a chord of length AB, which is 14 centimeter. And we are supposed to find the area of the triangle AOB. So we don't know this angle. It's not right angle triangle, okay? So this is 25, this is 25. Now to get the area of the triangle, what you can do, you can simply draw a perpendicular, and perpendicular की property क्या होती है? Perpendicular divides the chord, perpendicular from the center divides the chord in two equal parts. तो ये होगा 7 7 and this is 25. So you can get the value of OC. OC square plus CB square will be equal to OB square. CB is 7 square, OB is 25 square, OC square. So OC square has to be equal to 576, which is the square of 24. So this is 24, and we know the area of this triangle will be half into base into height. ऐसे दो ट्रायंगल है वहां पे, twice into area of triangle OCB, that is the area of required triangle AOB. So it is twice of half into base is 7, height is 24. It will be 12 sevens are 84, or you can simply 84 का double आएगा 160, right? That's answer option D. Correct.
What about this? A simple property, if you remember, you can easily answer this question within 30 seconds. Quickly try it and let me know if you have any answer. Quickly drop in the comment section. ABC has angle 60 degree and a triangle ABC has angle A as 60 degree. Let's say this is A, which is 60 degree. This is B, which is 70 degree, and definitely C has to be 60 plus 70 hota hai 130. It has to be 50 degree. Find the angle BIC in center. I need not to draw the in center basically. Quite confused. Okay, what is in center to pata hai na? A circle which is a center of a circle which is touching all three sides of the triangle. But how to get that in center? In center circle draw करने से कुछ नहीं होगा, वो angle तो नहीं मिलेगा हमें. Let's say this is I, but ये center आया कैसे? In center is ये चीज पता होनी चाहिए. In center is intersection of angle bisectors. इन सेंटर मिलता कैसे है? तुम एंगल बाइसेक्ट करते हो तो तुम्हें इन सेंटर मिलता है. इफ यू बाइसेक्ट दिस एंगल्स, बाइसेक्ट इन द सेंस ये 60 डिग्री है तो इसको बाइसेक्ट करना है 30 डिग्री 30 डिग्री. इसको हम बाइसेक्ट करेंगे (35 डिग्री 35 डिग्री. एंड अगर तुमने तीसरा भी करके देखा बाइसेक्ट तो एग्जैक्टली सिंगल पॉइंट से पास होते हैं ये तीनों एंगल बाइसेक्टर्स. ऑल थ्री एंगल बाइसेक्टर्स पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट एंड वी कॉल दैट पॉइंट एज इन सेंटर. एंड अगर तुम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ के एक सर्कल ऑफ रेडियस ड्रॉ करोगे दैट हैज टू बी touching all the sides. Have you understood what is in center? Right? Okay, अब ये सर्कल ड्रॉ करने पे मत जाओ. हमारा क्वेश्चन सिंपल है. BIC ये एंगल कितना होगा? That's it. एंगल BIC. Hopefully you can simply answer this. ये 30 डिग्री है, ये 35 डिग्री है. This is the triangle. Sorry, we are not supposed to calculate. We are supposed to calculate BIC. This is 25 degree. BIC is this one. Right, Shivam? What will be the answer? 25 and 35. Now was 60, so this has to be 120 degree. That's the last answer option. The only thing you need here is in center, is the angle intersection of the angle bisectors. And जो circumcenter होता है, let me tell you, circumcenter जो होता है, that is the center of side bisectors. साइड बाइसेक्टर्स मतलब साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स. यू कैन सिंपली रिमेंबर इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर. ये रहता है साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एंड ये होते हैं इन सेंटर. अगर चाहिए तो एंगल बाइसेक्टर ऑफ दैट ट्रायंगल, ऑल इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री एंगल बाइसेक्टर्स. दैट्स द सिंगल पॉइंट. ओके, दिस इज फॉर सर्कम सर्कल. So don't get confused here. मैं दोनों साथ में इसलिए बताया because most of the students get confused कि कौन सा एंगल बाइसेक्टर था, कौन सा साइड बाइसेक्टर.
सर्कम सर्कल जो बाहर से सर्कल जाता है उसके लिए साइड बाइसेक्टर, एंड जो अंदर से जाएगा वो है एंगल बाइसेक्टर। शिवम, ये एंगल 60 था, ये 70 था, तो ये एंगल तो 50 था ना अपना पूरा। हैव यू अंडरस्टूड दैट? Look at this. This was 60 degree, this was 70 degree, so it has to be 50 degree now. Some of the angles, have you understood that part? Oh, that's the easiest thing. Don't get confused, it's a really simple question. Let's move to the next. Try this. Okay, so what is the circumference of the circle? Quite interesting. Try it. We have xb as 3. I'll give some time to think so that you'll understand the question and the level of difficulty. So give it a try and let me know if you have any. Yes, in center is intersection of angle bisectors. That's the point of intersection of all three angle bisectors of a triangle. Okay, so we in this question we have this xb as 3 and this xy as 5. We don't know the radius. We can find yb definitely. 3 square plus 5 square yb square. This chord we can get. So yb has to be equal to 34, under root 34. So this is the perpendicular. It is given that is perpendicular. Okay, xy is perpendicular to ab, so definitely ये hypotenuse है और yb का वैल्यू मिला हमें √34. ओके, बट एनीवेज अभी तक हमें रेडियस तो नहीं मिला है. हाउ टू गेट द रेडियस? Any answer? Just a minute. Okay, so let me know if you have any answer. सर्कमफरेंस निकालना है तो डेफिनेटली हमें रेडियस के बारे में सोचना पड़ेगा. थिंक अबाउट इट. No? Is it tough? I can give some hints. You can take this as x, this part.
एंड ट्राई टू फाइंड दैट x. अगर x अगर हमें मिल जाता है तो हमें रेडियस मिल गया. x+3 इज द रेडियस. ओके, वी कैन कनेक्ट दिस एज वेल. Will we do by a similar? It's simple Pythagoras theorem, Shivam. You just need to use the Pythagoras theorem, nothing else. तो अगर मैं तुम्हें बताऊंगा ना, तुम्हें समझ में आएगा कि ये कितना इजी था. Let's say this is the radius. सिंपल पाइथागोरस थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है एंड ऐसे क्वेश्चंस काफी टाइम ये कैट में आ चुके हैं. मिल ऑफ फ्रंट थोड़ा सा तुम्हें केयरफुली जजमेंट लिया तो क्लियरली समझ में आएगा. OY will be radius, right. At the same time, Shivam, OB is also radius, right? So radius must be x+3, and this is radius. So can I say r square is equal to x square plus 5 square? देखो मैंने वहां पे x लिख दिया, यहाँ पे x मैंने लिखा, इसलिए अभी थोड़ा सा तुम्हें हिंट मिल गया कि यहाँ से कुछ कर सकते हैं. बट ये तुम्हें खुद से डिसाइड करना होता है तुम्हें कहाँ क्या लिखना है. ओके, तो x square plus 5 square, and we know r is x+3, radius is x+3, this is also radius, this is also radius. So simply x+3 whole square must be equal to x square plus 25, and you can simply get the value of x. X is not the radius. Okay, get the value of x and then you'll get the value of radius. So it will be x square plus 3 square is 9 plus 2 into 3 6x must be equal to x square plus 25. That's the simple calculation you can have. 9 minus कर दो यहाँ से, 6x has to be 16. So x has to be 8 by 3, and the radius of the circle will be x plus 3. That simply means 8 by 3 plus 3, which comes out to be 8 plus 9 is 17 by 3. by 3, and we are supposed to calculate the circumference. Circumference is 2 pi r. I'll write over here 2 pi into r. So 2 pi into 17 by 3. 17 into 2 is 34 by 3 pi. That's answer option C. Right, Shivam, have you understood this? Let's move to the next. Try this one. This is a really simple question if you know the thing. Find the value of x. One hint for you, and this is the question which should not take more than a minute, not more than 40-50 seconds. Maybe तुम कर सकते हो easily if you do it properly. Yes, that's right. C is the correct answer. It's completely similar triangles. Triangle POQ is similar to triangle SOR. Okay.
you answered it for the last question. I think the comments are delayed. So let's try this one, Shivam. So anyways, you know the answer now, and it's let's finish it together. It's not that tough question, it's simple question. तो अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके साइड्स रेशियो में होंगे, मींस PO upon SO must be equal to, this is PO bigger triangle, this is the smaller triangle, then bigger triangle upon smaller triangle, OQ upon OR. This has to be right. PO is 13x minus 31 upon x minus 2, and this must be equal to x plus 5 upon 1. Yes, right. Okay, one way you can go for solving this quadratic equation. What is my way to do? Means I'll recommend look at the answer option 7, 3 easy values hai guys, and both A and B be answer hai, so you can try for 7. If I try x as equal to 7, answer option A में try कर रहा हूँ, put x equal to 7, this has to be 91 minus 31 upon 7 minus 2 has to be 5. So 60 by 5, it is 12 upon 1, and if you put it here, OQ is sorry, it's not x plus 5, it's x plus 5. So 7 plus 5 is 12 upon 1. So that's right, 7 is okay, and if we put x as 3, even if we take answer option B and x equal to 3 अगर put करते हैं, 13 3s are 39 minus 31, ये आएगा 8 upon 1, and this will be 3 plus 5 8 upon 1. So this will also do. Answer is both A and B. Right? That's an easy. Okay, so we have few last questions for the day. So let's quickly finish it. Two circles with radius 5 cm have the direct tangent. Let me tell you, यहाँ पे ये डायग्राम हमें खुद बनाना पड़ेगा. This is the direct tangent जो एक साइड से टच हो रही है और एक यहाँ से टच हो रही है. ये डिफरेंट पॉइंट पे टच है. ओके, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे R है, एंड दिस इज द ट्रांसवर्स. इनडायरेक्ट भी हम उसको इनडायरेक्ट टेंजेंट भी बोल सकते हैं, या फिर हम ट्रांसवर्स टेंजेंट भी बोलते हैं. DCT डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट and TCT is the transverse common tangent. तो कॉमन टेंजेंट दो तरीके से निकाल सकते हैं हम, नीचे से या तो ऊपर से. डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दो वे से निकाल सकते हैं. कोई भी दो सर्कल्स अगर मैं ड्रॉ करता हूँ ना गाइस, तो दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये हो गए DCT. आई कॉल इट एज DCT डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, राइट. एंड दूसरा ऑप्शन, अगर कोई भी दो सर्कल है, हमें indirect common tangent, that is transverse common tangent. This is how we can draw the transverse common tangent, TCT, or indirect. So hopefully you know that, and after that you can, if you know that direct tangent and indirect tangent, क्योंकि ये डायग्राम हमें खुद से ड्रॉ करना होता है, it is not given in the question, so I have drawn it. Okay, so find the length of PQ. So we have radius as 5. This radius is also 5. Then find the length of PQ. This is what we are supposed to calculate.
and RS is given as 24. R यहां से स्टार्ट होता है, RS is 24. RS 24 मतलब है तो ये मिड पॉइंट तो है, ये कंफर्म है. दिस इज 12 एंड 12 ये सिमेट्री से भी तुम ले सकते हो. ये सेम पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया है तो ऑफ कोर्स दोनों का लेंथ सेम आएगा. देन दिस इज 5. यू कैन कैलकुलेट QT. टेल मी द आंसर फॉर QT. 5 12 सिंपल पाइथागोरस थ्योरम. इट्स नॉट दैट टफ. यहां पे भी ये 12 है, ये 5 है. OT will definitely get the answer, guys. This will be 13 and this will be 13. 13 plus 13, this has to be 26. Have you understood this, शिवम? अच्छा, मैंने 13 कैसे लिखा? डोंट टेल मी 13 कैसे आया गाइस. इतना तो तुम्हें सबको आना चाहिए. 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर. OT is the hypotenuse, OT square. तो 25 plus 144. ये पाइथागोरस ट्रिपलेट याद हो जाना चाहिए अभी. अगर ये याद नहीं है तो 5 square plus 12 square it has to be equal to 13 square. So this has to be 13. जिनको ये ट्रिपलेट याद है, पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर तुम्हें याद है, it will just take 10 seconds to answer this question. And this type of questions even CAT में ये इस टाइप के questions आ चुके हैं. पाइथागोरस थ्योरम commonly asked question type है. तो रिमेंबर फ्यू टिपिकल ट्रिपलेट्स. उस पर भी काफी बार वन क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा विदाउट एनी इक्वेशन. इन एवरी कैट एग्जाम इफ यू गो फॉर द लास्ट 2-3 ईयर पेपर्स यू विल डेफिनेटली गेट द क्वेश्चंस जो पाइथागोरस थ्योरम पे आए थे. एंड यू कैन जस्ट मैनेज जस्ट बाय नोइंग द पाइथागोरस ट्रिपलेट. चलो, वन लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. I guess this is the last one. Consider a right angle triangle with in radius 2 centimeter and circumradius 7 centimeter. What is the area of the triangle? So we know the in radius and circumradius. Okay, I'm not going to prove it now, guys. यहाँ पे मैं कुछ चीजें यूज करने वाला हूँ डायरेक्टली. And you also try to remember these things, and this is applicable to a right angle triangle. Okay. In radius and circumradius of any right angle triangle. So need not to draw it, I'm just giving you thing. Circumradius is bigger one and in radius is the smaller one. How T is the midpoint? Okay, Shivam, listen. How T is the midpoint? You can prove it by similarity of the triangle. Listen. Can I say, Shivam, this is right angle triangle? This is 90. This is 90. ये opposite angle है. अगर ये अपोजिट एंगल है तो ये दोनों एंगल का मेजरमेंट सेम होगा, ये भी सेम होगा, थर्ड एंगल भी सेम होगा. सो दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बट एट द सेम टाइम लिसन, ये रेडियस 5 है और ये भी 5 है तो ये सिमिलर नहीं. दिस टू आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल.
जस्ट मैं पिछले क्वेश्चन पे आ गया, आई जस्ट रीड योर कमेंट. So that's why you can prove these triangles are congruent. अगर congruent है तो फिर ये भी 12 होगा और ये भी 12 होगा. I hope that's the easiest thing. Most of the student can easily manage that. So इसलिए मैंने वो ज़्यादा explain नहीं किया था उस पे. And वो हमने triangles में किया हुआ है, similarity, congruency. Okay, so let me tell you few things related to this question. Guys, देखो राइट एंगल ट्रायंगल अगर है, इन राइट एंगल ट्रायंगल द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल विल बी हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूस एंड द रेडियस ऑफ इन सर्कल, इफ दिस इज ए, this is B and this is C, so this will be C by 2. Okay, and the radius of in circle is A plus B minus C divided by 2. That's what you need to remember. And इसकी proof तुम कर सकते हो just by using the normal अपना area of triangle के जो मैंने formula triangles में किए थे. If you remember those formula तुम उससे ये prove भी कर सकते हो. But let's not get into proof. And ये दोनों पॉइंट्स तुम्हें याद ही रखने हैं. दैट्स द रियली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. ऐसे नहीं कि सिर्फ इस क्वेश्चन में यूज होगा, इस पे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, दूसरे भी फ्रेम हो सकते हैं. So should remember that. So a plus b minus c divided by 2, that's the in radius. And circumradius तो तुम डायरेक्टली याद रख लोगे, ये हाइपोटेनियस का हाफ होता है. हाइपोटेनियस का जो मिड पॉइंट होता है वो सर्कम सेंटर का सेंटर होता है फॉर एनी राइट एंगल ट्रायंगल. So let's quickly finish it. So value of C, circumradius is 7, means C has to be 14. C by 2 is 7, so C has to be 14. Okay, now we can have one thing. In radius is 2, so 2 plus 2 into 2 is 4 is equal to a plus b minus 14. Minus 14 इधर प्लस हो जाएगा. a plus b has to be 18. बट द प्रॉब्लम इज अब तुम पाइथागोरस ट्रिपलेट से जाओगे तो ये कुछ भी सॉल्व होने वाला नहीं है. पाइथागोरस ट्रिपलेट से नहीं होगा. एनी आंसर? कैन यू सॉल्व दिस? शिवम? C is 14 and a plus b is 18, and we can have a square plus b square as 14 square, which is 196. We can put value of a, sorry, value of b as 18 minus a square plus 18 minus a whole square. It has to be equal to 196. How to get the values? Because ये Pythagoras theorem, sorry, ये quadratic equation में जा रहा है, and this is quite tricky quadratic equation. A square plus 18 square is 324 plus a square minus 36a equal to 196. 2a square minus 36a प्लस इसमें से 200 माइनस कर देते 128 आ गई. तो a स्क्वायर माइनस 18a प्लस 64 इज इक्वल टू 0. a square minus 18a plus 64 equals to 0. So I will give you 1 minute to think. Shivam, can you answer me something? So our question is, what is the area of the triangle? Okay, but the problem is जब तक हमें a and b मिलता नहीं है तो a into b जब हम करेंगे
that is half into A into B. Because ये तो quadratic equation solve नहीं होने वाला है. I want you to tell me the numbers whose multiplication is 64. Multiplication is 64 and addition is minus 18, and these are the numbers जो possible नहीं है, but real root तो आने वाले हैं इनके, but solve करना पड़ेगा. So we can go for delta, that is b square minus 4ac. Okay, and we can use the formula. That's the one way and the lengthy way to think, lengthy way to solve. So any other way, Shivam? Do you have any answer for this? One short trick for that question. Okay, let me explain what is that short trick. Listen, I'm quite sure is quadratic equation के roots आने वाले हैं. That will be the value of a, right? One root has to be a and the other root must be 18 minus a. Am I right? Am I right, Shivam? If I say one root is a and the other root is 18 minus a. अब ये कैसे आया? So let me quickly explain. If I say alpha and beta are the roots, then alpha, sum of the roots must be minus b by a. Minus b by a, and alpha into beta has to be c by a. Am I right? The thing is alpha plus beta must be 18 and alpha into beta must be 64. So basically यहाँ पे जो इस इक्वेशन के जो रूट्स आने वाले हैं ना, वो यही रूट्स हैं, a एंड b ही है. a अगर रूट है और b दूसरा रूट है तो a प्लस b 18 होना चाहिए एंड a into b has to be 64. So without finding the values of a and b, I can tell you what is going to be the area of that triangle. It is going to be half into a into b, half into 64. It has to be 32. Hopefully all of you understood this, how I calculated, and that's the tricky thing related to this question. Otherwise तुम जाओगे and इसको quadratic से solve करके determinant formula use करके तुम solve करोगे तो भी you'll get the final answer same, but that's really lengthy method. and अगर तुम ये tackle कर पाते हो तो ये बहुत easy था. Have you understood this, guys? Give me a thumbs up if you understood this part. The last calculation was really tricky. Let me know in the comment section if you have any doubt, or if you understood. You can just quickly give me a thumbs up. That's it for the day, guys. Done. We are done for the day. So hopefully all of you understood that. Done for the day, guys. So those who are willing to go for the plus subscription of Unacademy, they can quickly download the Unacademy learning app, and I'm going to start with the plus course on plus platform of Unacademy from Friday. So from Friday I'll be teaching numbers 4 p.m. to 6 p.m. on the plus platform. Okay, so for that you'll be required to get the Unacademy plus subscription, and if you use this code SHAM1 to avail 10%, you'll get the 10% discount. Okay guys, that's it for the day. Good night all of you.